Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 15th chapter of your textbook, The Mosquito. It's a poem and it has been written by D.H. Lawrence. The poem is taken from D.H. Lawrence's collection of poems titled as Birds, Beasts and Flowers, and the poet uses a technique known as pathetic fallacy, which describes human emotions to animals and objects. Now, in this poem, the poet talks to the mosquito by treating it as a fellow companion. The poem is in the form of a assumed conversation between the poet and the mosquito, and the poet raises many questions to the mosquito by using the second narration, that is you, regarding its trick. सो नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू द पोइम. तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉन्वर्सेशन होती है एक मॉस्किटो और पोइट के बीच में. तो किस बात पे बहस हो रही होती है, कौन सी बात है जो पोइट एक मॉस्किटो से पूछना चाहता है. नाउ वी विल जस्ट फर्स्ट स्टडी द पोइम. When did you start your tricks, Monsieur? What do you stand on such high legs for? Why this length of shredded shank, your exaltation? Is it so that you shall lift your center of gravity upwards and weigh no more than air as you alight upon me? Stand upon me weightless, you phantom. I heard a woman call you the winged victory. In sluggish Venice, you turn your head towards your tail and smile. How can you put so much devilry into that translucent phantom shred of a frail corpus? Cure with your thin wings and your streaming legs. How you sail like a heron or a dull clot of air, a nothingness. Yet what an aura surrounds you, your evil little aura, prowling and casting a numbness on my mind. That is your trick, your bit of filthy magic. Invisibility and the anesthetic power to deaden my attention in your direction. But I know your game now, streaky sorcerer. Cure how you stalk and prowl the air, encircles the evasions enveloping me. Ghoul on wings. Winged victory, settle and stand on long thin shanks, eyeing me sideways and cunningly conscious that I am aware you speck. I hate the way you lurch off sideways into air, having read my thoughts against you. Come then, let us play at unawares and see who wins in this sly game of bluff, man or mosquito. You don't know that I exist, and I don't know that you exist. Now then, it is your trump, it is your hateful little trump, you pointed fiend, which shakes my sudden blood to hatred of you. It is your small, high, hateful bugle in my ear. Why do you do it? Surely it is bad policy. They say you can't help it. If that is so, then I believe a little in Providence protecting the innocent. But it sounds so amazingly like a slogan, a yell of triumph as you snatch my scalp. Blood, red blood, super magical forbidden liquor. I behold you stand for a second and spasmed in oblivion, obscenely ecstasied, sucking live blood, my blood. Such silence, such suspended transport, such gorging, such obscenity of trespass. You stagger as well as you may. Only your accursed hairy frailty, your own imponderable weightlessness, saves you, wafts you away on the very draught my anger makes in its snatching. Away with a pang of derision, you winged blood drop. Can I not overtake you? Are you one too many for me? Winged victory. Am I
not mosquito enough to out mosquito you. Cure, what a big stain my sucked blood makes, besides the infinitesimal faint smear of you. Cure, what a dim dark smudge you have disappeared into. So ये कॉन्वर्सेशन होती है एक जो पोइट है D.H. लॉरेंस और एक मॉस्किटो के बीच में एक एज्यूम्ड कॉन्वर्सेशन है कि एक एज्यूम्ड कॉन्वर्सेशन है, नॉर्मल सी बात है, हम मॉस्किटो से बात तो कर नहीं सकते हैं। अब जो D.H. लॉरेंस है ये कहता है कि मतलब ये एक मॉस्किटो से कुछ सवाल पूछता है और इसको एक किस्म का एक चैलेंज देता है कि मैं मतलब पहले तो इसको लगता है कि मॉस्किटो काफ़ी पावरफुल है एक ह्यूमन बीइंग से, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है मॉस्किटो से। अब जो मॉस्किटो की हरकत है उससे पहले पहले पॉइंट को लगता है कि नहीं, ये बहुत ही पावरफुल है। तो जो पॉइंट है ये मॉस्किटो से कहता है कि मॉन्जियर एक फ्रेंच वर्ड है फॉर मिस्टर, तो ये इसको ऐसे एड्रेस करता है, कहता है कि तुम अपनी ये ट्रिक्स जो तुम इंसान को मतलब बाइट करते हो, जो इसका ब्लड सक करते हो, किस तरह से तुम ये अपनी ये ट्रिक्स स्टार्ट करते हो, किस तरह से तुम अपनी पतली पतली जो बिल्कुल थिन लेग्स होती है इनके ऊपर कैसे तुम खड़े रहते हो और तुम्हारा ये क्या ट्रिक है, मतलब इन पतली पतली टांगों पे अपना पूरा वजन डालना। अच्छा, ये कहता है कि शायद तुम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तुम मतलब अपोज करना चाहते हो, तुम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ रखते हो। ये क्या मतलब तुम्हारा एक तरीका है, मतलब इतनी लंबी लंबी टांगों पे तुम खड़े रहते हो। वो कहता है कि जो पॉइंट है वो कहता है कि तुम्हारा जो वजन है मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि तुम इतने हल्के हो, तुम एक मतलब समझ ही नहीं आता है, तुम्हारा एक ऐसा मतलब एक घूस्ट हो, एक भूत की तरह, मतलब बिल्कुल तुम्हारा जो वेट है वो समझ नहीं आता है। किसी की बॉडी के ऊपर अगर तुम बैठोगे तब भी तुम्हारा मतलब जो वेट है वो महसूस नहीं होता है। तो ये पॉइंट कहता है कि मैंने एक औरत को सुना है कहते हुए विंग्ड विक्ट्री, तो मैं वो किस नाम से बुलाती है, विंग्ड विक्ट्री। तो अपनी एक लेजी आवाज में वो कहती है विंग्ड विक्ट्री, और तुम ये जो नाम है ये विंग्ड विक्ट्री सुन के तुम बहुत ही खुश हो जाते हो, मतलब एक स्माइल उसको देते हो उस वुमन को, तुम्हें बहुत फख्र महसूस होता है अपने आप को। कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बॉडी में, मतलब ये इसको कहता है मॉस्किटो को, तुम इतनी छोटी सी ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट सी बॉडी में, इतनी हल्की जो बॉडी है जिसका वजन भी महसूस नहीं होता है, इसमें इतनी शैतानियत कैसे तुम छुपा के रख सकती हो, इतनी शैतानियत तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है इतनी शैतानियत। कहता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द होने से ही कुछ अजीब सा महसूस होता है, मतलब जब भी हम किसी मॉस्किटो को अपने आसपास देखते हैं तो हमें काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, हमें लगता है कि अभी ये आएगी और हमारा ब्लड सक करेगी। कहती है कि तुम इतने छोटे, कहता है कि तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द होने से ही कुछ अजीब सा लगता है, मतलब तुम्हारा वो जो मतलब आसपास होना बिल्कुल भी वो अच्छा, कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती है तुम जब भी आसपास होते हो, क्योंकि सबको पता होता है कि तुम मतलब ब्लड सक करने वाले हो। तो कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई इविल स्पिरिट, कोई गंदा सा कोई मतलब जो स्पिरिट है वो पंखों पे खड़ा है।